Health Education Lecture Series. All the listeners of Health Education Lecture Series, I'm your host, Gurdeep Singh Sandhu, homeopathic consultant. And I'm here at 7021 Village Parkway, Dublin, California, 94568. My phone number is 408-687-1899 and email address is homeomedicine, HOMEOMEDICINE @yahoo.com. Anytime, at any age. When you are tired of any treatment, please call 408-687-1899 for scientific homeopathic approach to your diseases. A systematic approach, you can say, is a systematic approach, which is easily understandable what we are doing and why we are doing. Most of the treatments, they just suppress the symptoms. Whatever you describe to the doctor, they try not so that the patient should not see all these symptoms. You show something on the skin, you cough something in the lungs, and ultimately, when you go to the doctor and you explain all these things, mostly the doctor try to subside those symptoms that patient should not see, that the patient should not see all these symptoms. And for this one, they try forcibly so that the body should work in a way that it should suppress. It should suppress the symptoms by any means. But nature wants to expel something out. I have declared many a times, there are 9 systems inside the body working. And just imagine, when 9 persons are working in a office, definitely there will be garbage. And definitely there will be some arrangements that how this garbage should be released. Same way, nature has made arrangements to evacuate the garbage, because food we are consuming going to the intestine, ultimately it is converted into blood is going to the cells, and cells, they use that foods, they use that carbon dioxide, oxygen, and ultimately when you work, you produce carbon dioxide. When you breathe, you take oxygens. When you breathe out, you bring carbon dioxide out from your body. The same way, all the systems of the body are excreting their garbage, and the via media is the same, by which a cell gets the food, gets the oxygen. By the same reverse order, every cell send its garbage, send its residual, whatever is after the consuming of the food, means in the blood, and also after taking out the oxygen, whatever is required by him. So in this way, in this way, the system is working. And when any symptom is produced, it indicates that the body
wants that something should come up, which is not being released by a normal routine of the body. This body is releasing always carbon dioxide, releasing garbage via the stool, by the urine, by the sweating, by the breathings. So whatever is coming out of the body, that is the purpose of that one is to release the garbage from the body. If there is no extra garbage inside the body, every system will not be offenseless, and sweating, breathing, stool, urine, they are not smelling hard. But as much as their content is full of toxins, full of garbage, which is being released by the body from the kidney, from the intestines, from the skin by sweatings, from the breath, from the lungs, all that. And when all these sources of releasing the garbage are having toxic substances or the full of toxins, full of the garbage, then they are basically contaminated, and their normal nature of the breath, there should not be offensive smell. Normal nature of the stool, because stool at the area of rectum and sigmoid colon, they are covered by a layer of mucus, a type of thin layer, which saves us that when the stool is passed in normal without any breakage, there is no smell. When any person stool is freckled in pieces, that is offensive smell. Means something has damaged inside that. The garbage, just like we put the garbage in envelopes, plastic bags, and then we throw it out. Otherwise, our garbage container will smell a lot. The same way, when the nature expels out this garbage by the stool, then it wraps it. It wraps it. When the wrapped stool comes outside, it do not smell. And if it is not wrapped, means something's wrong inside. There is excessive peristaltic motions in the sigmoid colons or in the intestines or somewhere in the intestines. Then that wrapping process is braked. And when it's broken, under those conditions, your stool will be smelly, foul smelling. And it is not only for the stool, it is for the urine as well. Normal when the urine is watery, normal when the urine is not having excessive nitrogenous gases released to him, just like a healthy young boy, when it urinates, it's a pale color or even a watery color and do not smell it. As we grow, as we eat many other things, their toxin is released, mostly the ammonia. When you go to the any bathroom area, it smells. That's the ammonia smell. And because many people are going over there, in the same way, if an individual's urination is smelling foul, smelling ammonia, smelling a different type of smell, it means inside the body there is a big garbage which the nature is relieving or expelling it out through the urine. Just like I told you about the stool, the garbage is released by the urine. Third gulp, sweating. Mostly the sweating is not that smelly. It's a normal content which comes to the skin, and skin filters it. There are apricot
apocrine glands. That is known as apocrine glands. Nature has fixed apocrine glands in our skin and many other places all over the bodies. And when any garbage from the blood reaches to the skin cells, they break it. They break it so that they could be excreted through the pores of the skin. And if if there is an excess of garbage which was not released by the stool, by the urine, and is sent to the skin, because skin is a big organ, is covering the whole body, is the biggest organ of the body, and but it is considered less important as compared to the internal organs. Internal organs are saved inside the trunk, means chest and abdomen. This is known as trunk. They are saved. But skin is the outwardly covering, but it's a big covering. And the extra garbage, which was still not released by the stool, by the urine, then that circulates into the blood and goes to the skin. And the skin pores, if that is the hard thing. Skin pores, just like in the winter, if you see your axillas are smelling bad. In summer, axillas and groins are not smelling bad because the excess toxin is released via these pores forcibly and brings out smell. Whereas in the summer sweat, it is not smelly. It's more of the evaporations, and sweating is more in the summers. Sweating is less in the winters, but it is not that there is no swelling, there is no sweating in the winter. There is, but we can feel that smell. All the pores of the skin all around are closed. They do not allow the wastage from the blood to come out from the skin everywhere. When it is not everywhere, it means the most of the things of the garbage is relieved from the axilla, from the folds of the skin. In the arms, we do not see that, but in axilla, we feel that. That smells in the winter, the smelling from the axilla and the groin is bad smell because it is bringing out the whole garbage from these sources. Whereas in summer, all the pores of the skin all around are working and they are allowing to get that garbage out in the shape of perspiration, sweating. And if something is more harder, more larger, more bigger, which is not excreted through the pores of the skin, there are apocrine glands. Apocrine glands are over throughout the body. The purpose of these apocrine glands is to chop the harder substances which is coming into the blood and is not easily excreted from the pores of the skin, that is excreted after being chopped by the apocrine glands, and then the sweat comes out. And it depends upon that substance, what type of substance is that which is being secreted by the skin. If it's a toxic, if it's irritated, then you will itch, mostly in the folds of the back of the knee, elbow, and in front of the that the cubital fossa, that's known as cubital fossa, just in the front of the elbow, and your axillas and your neck folds, back of the ears, they smell bad. They bring out all these things
though these are chopped by the apocrine glands and make smaller so that they could be dissolved into the water of the skin and coming out in the shape of perspiration, sweating. But it will, if anybody's sweating is filthy, foul smelling, it means his body from inside is not clean. If body is cleaned inside, it means there is no toxin in the sweating coming out. As we are young, healthy, all the cells are oxidated normally, we are doing exercise, body is inside cleaned, then stool, urine, sweating, all those things will not smell bad. But if the same thing is metabolized in young persons, but in old persons, you have to do that some. You have to do something to excrete all these things so that they can normally be released from your urine, from your stool, from your sweat, and also from the breathing. Even breathing smells bad indicates indigestions. And indigestion means normal enzymes are not creating. Normally, food is not digested in the normal way. All these things. And when it is converted inside the intestines, it is converted into the gas, and ultimately, gas goes upward, passing many barriers. As I have told you, there are, when the food goes in the food pipe, then to the stomach, then from stomach to the intestines, and in the intestines, it again fermentates by the enzymes, pancreas, bile, enterokinase. There are many more other enzymes which are produced over there and are mixed into that food at that region after the stomach, and they fermentate. When they fermentate, normally the gas has to pass downward. Mostly it should not be, but as we grow older, system becomes weak, gas formation is there because nature has put some type of bacteria in our intestines. They are the normal resident of our intestines so that they can swallow the gas, they can save us from the gas, they can save us from the bad smells. But if those bacteria grow more in numbers, even then that is the problem. If those bacteria are less in numbers, even then there is a problem. So I was talking about when the food is fermented inside the intestines, the gas goes upward. And there are many more barriers. We have talked about many times that from the intestine, when it goes through the stomach, there is a barrier of pyloric opening. And that pyloric opens mostly delivers the food from the stomach to the intestines. But when the intestine has fermentation, has formed the gas goes upward. It's nature. It's the nature of the gas that it will goes upward. Then this pyloric opening will be opened, pressed up, pressure, gas formation, and then it will come into the stomach, and you will feel heavy. Oh, even then. I have not taken food, but even then my abdomen feels heavy, this and that. It indicates that the gas from the intestine has come up into the stomach. And from the stomach, again, there is another barrier that is known as cardiac orifice. That cardiac orifice is also a door which do not allow the stomach content to go upward. It pushes it downward. But under circumstances, ultimately, this orifice becomes weak,
And excess of gas coming into the stomach from the intestines opens forcibly this barrier, that is the cardiac opening, gas upward. And ultimately, after 1.5 inches, there is another barrier that is known as diaphragmatic opening. And that diaphragmatic opening is again opened. There are many more barriers. Then ultimately in the neck, there is epiglottis barrier. And there are many more barriers. Even after opening all these barriers, the gas which is formed in the intestine goes up. And that gas depends upon the nature of the enzymes which are produced inside the intestines. And then that will may be smelly, that may be acidic, that may be of some other offensive type of smells. In this way, breathe of a person indicates us that something is wrong in the indigestion digestive system. Smells bad. So today I just want to convey you that when process is not going on normally, when processes of the excretion is not going on normally, then all the sources of excretion, all the sources of excretions are smelling bad. Stool, urine, sweating, breathing, all these smells bad. They are not natural. Naturally, they do not have any type of smell. And the smelly garbage, just like I told you, when we put into the plastic bag our garbage, daily garbage, and we knot it, then put into the garbage containers. It do not smell. But if we do not pack it properly, then our garbage container smells, it smells outside. The same thing, there is a wrap on our stool. If it's not breaked, freckled, then it's not smelly. A normal smell of this stool is there, but foul, offensive smell is not there. Just like somebody farted, offensive fart. Somebody farts, they are not that much offensive. It depends upon the enzymes and reactions which is taking place inside the intestines by the enzymes and the peristaltic motions. If those wraps are ruptured, ultimately stool becomes offensive, filthy smell. And the urine itself, because it is not having any type of wrapping on that, is watery. It's a watery solutions. And it also indicates if the blood coming into the kidneys is filtered out, and kidney has no partiality. Kidney has no partiality. If anything wrong extra comes into the urine, kidney has to expel it out. Kidney has to expel it out. Sugar, uric acid, what else? Whatever is circulating inside the blood of the persons, if it is excess in nature and nature do not want that this should go back to the urine, back to the blood as in circulations, then kidney tries to expel it out into the urine as far as possible. And when these type of substances are coming out with the urine will smell. And mostly those things are the ammoniatic smell, that is known as ammoniatic smell, which is in the urine. And same way the sweating, normally the sweats do not smell bad, but if they contains the toxic substances, and if they contains irritated substance, because the apocrine gland, they are not doing any partiality like the kidneys. Their purpose is to just cut down or chop
The hard substances which are not being released from the pores of the skin, they should be released. All the blood which is coming into the skin and is containing something hard which is not possible to be released from the skin pores easily, then to make it easy to excrete from the skin pores, these apocrine glands chop it. Their purpose is to make it small, break it with its reaction, and ultimately is calmed out. And all the sweatings do not irritate. In a healthy person, the sweating do not irritate any persons. But if something is wrong inside the body, in case of uric acid, in case of kidney failures, in case of many other things, then there is a garbage from the all other sources from the body inside, then coming out through the sweating, it causes irritations. And that it is sometimes you do not see the sweat. It's dry up, but you itch. Wherever you itch, it indicates that from those pores of the skin, something has come up which is toxic, which is irritating. That is why you itch. Anywhere when you itch, it means something toxic substances has been released from those pores in the skin. It means something is wrong inside the body. And if just it's an interesting question. Mostly in the routine modern practice, what they do, try to put some lotions on that so that it should not irritate. Try to put stronger and stronger lotions in that area so that they should not irritate. What we are doing, we are making the skin healthy, we are making the pores tight so that it should not come up there. But nature want to expel it. Nature want to expel this garbage out, and you are pressing it down. It should not come up because you are doing against the nature. The normal process is to trace out the source of garbage. The normal process is to trace out the source of garbage inside the body from where this garbage is produced in excess or toxic, so that that organ should be treated. But if you suppress those things, ultimately that garbage go to another organ, another site of the skin, and will come from there. And you might have noticed, all those who are listening these programs, they might have noticed that when you apply any ointment or cream in any portion of the skin, ultimately after sometimes you will see the it is itching on the other side, on any other place in the any other side of the skin. And ultimately, if you apply this thing to the other side, ultimately it flares up to the skin. I have seen in my 50 years of practice, many of the people's coming with the skin is whole fill up with the scratching eruptions. Different names, recipilatus, ringworm, eczema, dry eczema, oozing eczema, this and that. There are many more names of the skin problems, but principle is that the toxic substances are released through the skin from the inside of the body. And what should we do? Just like I have given example many a times of the vomiting. If vomiting is coming, you will stop that vomiting before that substances, toxic substances is released from the body. You will not be success. You will not succeed, or it will come up with the diarrhea, because nature want to save the life, and nature has no other source
to evacuate it by the vomiting or by the stool. It will bring it out. But if by forceful medications or anything you stop that vomiting, ultimately it will create anxiety inside the body. It will create uneasy state of the body ultimately. And if the source or the reason behind that has been solved under effect of that medications, then the credit will go to that medicines which has stopped the vomiting, which has stopped the diarrhea. Means if a simple thing, digestion, and the digestion has been completed in a normal way within 2 3 4 hours, and then you will give credit to that medications which has stopped the vomiting. But if kidney is failure, vomiting is coming from the uric acids, excess of uric acids, excess of any other things, that's not going to be relieved in a short while. Cachexia, that's not going to be relieved. Then what will happen? It will increase your pains, increase your disease and distress inside the body. So today, our English lecture is finished. We will come to the Hindi lecture at this time. हिंदी सुनने वाले तमाम श्रोताओं को गुरदीप सिंह संधू होम्योपैथिक कंसल्टेंट की ओर से बड़े प्यार और सत्कार से सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ आपका रोजाना का शो हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज लेकर। और आज का हमारा लेक्चर एक स्पेशल लेक्चर इस बात के लिए था कि हम लोग ट्रीटमेंट करते वक्त अगर नेचर के सिद्धांत को भूल जाएंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि हमारा जो आजकल ट्रेंड चल रहा है मेडिकल साइंस का, वो ये चल रहा है कि जो चीज आप पेशेंट के तौर पर डॉक्टर को पेश कर रहे हैं, मीन्स जो तकलीफ आप बता रहे हैं डॉक्टर को, डॉक्टर का काम है उसको हर हालत रिलीव करना, बिना ये जाने कि इसके पीछे कारण क्या है। और जब तक हम कारण सॉल्व नहीं करते ना, तब तक हम किसी चीज का परमानेंट हल नहीं कर पाते। वही बात शरीर की भी है। शरीर में 9 सिस्टम काम करते हैं, और जहां 9 आदमी काम कर रहे होंगे वहां पर गार्बेज तो बनेगा ही ना। और हर ऑफिस में, हर जगह जहां लोग काम करते हैं, वहां गार्बेज निकालने का प्रोसेस, एवरी डे का प्रोसेस बना होता है। इसी तरह ही कुदरत ने भी इस शरीर को बनाते वक्त इसमें गार्बेज को निकालने का अपना प्रोसेस बनाया हुआ है। और वो आप सब जानते हैं, मैंने भी इन प्रोग्रामों में बहुत बार आपके साथ साझा किया है कि भाई इसको निकालने के लिए कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम सेट किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं सीक्रीशन और एक्सक्रीशन। एक तो सीक्रीशन होता है। सीक्रीशन जो होता है वो मेनली इनसाइड दी बॉडी होता है, और वो ये होता है कि वो फिर दोबारा बॉडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सक्रीशन वो होता है जिसको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, और बॉडी से बाहर निकालते हैं तो उसके लिए कुदरत ने, जिसको हम फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, जिस गार्बेज को हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करते उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। और वो जो एक्सक्रीशन है उसको बॉडी से निकालने का कुदरत ने एक फिक्स प्रोग्राम बनाया हुआ है। वो है टट्टी के रास्ते, पेशाब के रास्ते, सांस के रास्ते, पसीने के रास्ते। ये उसके नॉर्म्स हैं, ये तरीकाकार हैं जिससे रोज का जो गार्बेज हर वक्त का, हर मिनट का, बल्कि ये कहना चाहिए कि हर मिनट का जो गार्बेज है वो निकल रहा है। अब जैसे हमारे घरों में हम गार्बेज रखते हैं ना, तो घरों में गार्बेज रखते हैं, गार्बेज कंटेनर में फेंकते हैं उसको,
प्लास्टिक के लिफ़ाफ़े में रैप करके भेजते हैं और प्लास्टिक के लिफ़ाफ़े में रैप करके भेजते हैं ताकि वो बैड स्मेल ना दे। अगर हम खुला गार्बेज कंटेनर में डालेंगे, तो हफ़्ता भर तक उसको घर वहीं रहना है, तो वो जब दरवाज़ा उसका ढक्कन लिड खोलेंगे तो उस वक़्त वो दूर-दूर तक स्मेल उसकी फैल जाएगी। और अगर उसको बंद करके हम अ, कंटेनर में फेंकेंगे, तो हमारा जो कंटेनर है वो स्मेल नहीं करेगा, दूर तक स्मेल नहीं फैलेगी उसकी। ठीक, यही बात कुदरत के निज़ाम के बारे में मैं आप सब लोगों को आज के प्रोग्राम में बताना चाहता हूँ कि कुदरत के निज़ाम में इस शरीर से गार्बेज निकालने का कुदरत का जो तरीकाकार है, उसको समझने की ज़रूरत है। टट्टी के रास्ते, पेशाब के रास्ते, पसीने के रास्ते, साँस के रास्ते वो ये गार्बेज निकालती है। अगर तो वो गार्बेज नॉर्मल है, निकलेगा तो हेल्दी ब ब बंदे का भी निकलेगा और बीमार बंदे का भी निकलेगा। अब जो हेल्दी बंदा है, यंग बच्चा है, किसी बच्चे से हमें स्मेल नहीं आती, बॉडी एक्टिव होती है उसकी। उसका मेटाबॉलिक रेट इतना ज़्यादा तेज़ होता है और जो वो खाता है वो हज़म होता जाता है, एनाबॉलिक रेट तेज़ होता है, उसकी डेवलपमेंट इस्तेमाल होता है, गार्बेज बचता ही बहुत कम है। गार्बेज बहुत कम बचता है और जो बचता है वो निकाल दिया जाता है, वो स्मेल नहीं करता। बच्चों में आम तौर पे स्मेल कम होती है, नहीं होती। गार्बेज है तो ये तो नहीं कह सकते स्मेल नहीं होती, लेकिन नहीं होती। कंपैरेटिव जो बंदे बीमार होते हैं, उनकी जो स्मेल है, वो दूर तक जाएगी। अब उसके बाद जब स्टूल निकलता है ना, स्टूल को भी कुदरत रैप करके भेजती है। वो हमें दिखाई नहीं देता। वो बहुत बारीक रैप जो सिग्मॉइड कोलन से स्टूल नीचे आता है रेक्टम में, तो वहाँ रेक्टम के जो ग्लैंड्स हैं, उनमें से जो मवाद निकलता है, ये इस स्टूल को रैप कर देता है। और अगर तो सॉलिड स्टूल निकलता है, वो स्मेल नहीं करेगा। स्मेल नहीं करेगा मतलब ये नहीं है कि छोटी गार्बेज तो गार्बेज है ना। गार्बेज तो गार्बेज है, इस चीज़ को आप इस तरह लीजिए कि वो स्मेल तो करेगा लेकिन दूर तक फैलने वाली स्मेल उसकी नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों को स्टूल टूट-टूट कर ब्रेकेज होकर आता है, पीसेस होकर आता है, वो दूर तक स्मेल करेगा। वो दूर तक स्मेल करेगा और ये इस बात की इंडिकेशन है, सबसे पहली तो आपका जो इंटेस्टाइनल का अंदर का निज़ाम है, वो गड़बड़ है। दूसरी बात है, डिफरेंट टाइप की जो स्मेल्स होती हैं, वो डिफरेंट टाइप की इंडिकेशन करती हैं कि किसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। बदहज़मी मोटे तौर पे तो सभी आप जानते हैं, बदहज़मी हुई, पेट ठीक नहीं हुआ, तो उसके हिसाब से ये स्टूल जो है वो स्मेल करेगा ही। लेकिन अब हम बहुत सी चीज़ें जैसे पीले रंग की टट्टी आई, तो हम कहते हैं कि लिवर काम नहीं कर रहा है, जॉन्डिस हो सकता है, ये सब हो सकता है, वो सब होता है। टट्टी काले रंग की आई, तो हो सकता है कहीं न कहीं ब्लीडिंग हो रही हो, इंटेस्टाइन में कुछ ऐसा हो सकता है। इस तरह अलग-अलग बहुत सी लंबी चेन है इस टाइप की कि इस तरह का स्टूल होगा तो ये हो सकता है, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स फूड में है तो ये हो सकता है, पीले रंग का स्टूल है तो ये हो सकता है, शिट फुट टूट कर स्टूल आ जाता है, एसिडिटी ज़्यादा होगी, स्मेल उसमें ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें एक लंबा वेरवा है इस बात के लिए, लेकिन जनरल लेक्चर में मैं आप सब लोगों को यही बता सकता हूँ कि भाई जनरल लेक्चर में जब भी कोई एक्सक्रीशन जिसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, वो शरीर से बाहर आता है और अगर वो स्मेल करता है, तो स्मेल करने का मतलब यही है कि उसमें निकलने वाला गार्बेज एक तो रैप्ड नहीं है, दूसरा गार्बेज में टॉक्सिक सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर से गार्बेज कहीं से ऐसा आ रहा है, जो नॉर्मल नहीं है। तो फिर
उसका मतलब ये भी होता है कि हमें उसको फाइंड आउट करना होगा कि भाई ये गार्बेज आ कहाँ से रहा है। सो पहली बात मैंने आप सब लोगों को ये बता दी कि जो हेल्दी तंदुरुस्त बंदे होते हैं ना, उनका स्टूल सेमी सॉलिड होता है और उसके बाहर एक फ़िल्म कोटेड होती है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वहाँ के जो ग्लैंड्स हैं, वो इस तरह की म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जिनकी वजह से ये वो रैप्ड होता है और बदबू नहीं मारता। लेकिन जब भी ऑफेंसिव स्मेल दूर तक जानी शुरू हो जाए, इसका मतलब उसका स्टूल नॉर्मल नहीं है। कलरिंग का तो मैंने आपको बता दिया। पानी की तरह स्टूल होते हैं, उसका क्या कारण है? पीला स्टूल है, उसका क्या कारण है? काला स्टूल है, उसका क्या कारण है? ये सब मैंने आपको, ग्रीन है तो क्या है? तो ये सब मैंने आप सब लोगों को बता दिया। लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि अंदर का निज़ाम सही नहीं। दूसरा, गार्बेज का तरीकाकार, अगर इससे बच जाए, स्टूल से जो बच के जितना भी पानी शरीर में होता है, उसके द्वारा गार्बेज घोल कर भी कुदरत बाहर निकालने की कोशिश करती है और वो निकलता है किडनी की वजह से, किडनी के द्वारा। और किडनी बेलिहाज़ है, पार्शियलिटी नहीं करती किसी के साथ। जो उसके पास ब्लड आता है ना, उसको इस तरह फ़िल्टर करती है कि बॉडी को ये चाहिए इतना, इतना इसको हीमोग्लोबिन चाहिए, इतना इसको यूरिक एसिड या एसिड चाहिए, इतना ये चाहिए। तो वो उस ब्लड को इस तरह फ़िल्टर करती है कि उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है पानी में घोलकर। ब्लड में पानी तो है ही, उससे घोलकर उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसीलिए तो हम लोग डॉक्टर लोग जो हैं, वो चेक करते हैं यूरिन। यूरिन को चेक करते हैं तो पता चलता है कि भाई इसमें क्या आ रहा है, बाहर क्या आ रहा है। तो उसी से अगर यूरिक एसिड आ रहा है तो ओ इसको तो गठिया है भाई। इसी तरह यूरिन में आने वाली बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बीमारियों के बारे में ज्ञात करती बताती हैं। और ये भी हमें पता चलता है कि कौन सी बीमारी कहाँ पर डैमेज कर रही है, उस अंग को ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, उसको हेल्प करने की ज़रूरत है। सो किडनी के द्वारा आम तौर पे जो पेशाब की स्मेल है ना, अगर बच्चा पेशाब करता है तो आप देखिएगा स्मेल नहीं आएगी। एडल्ट स्मास करता है तो हमारी खुराक भी चेंज होगी और हमारा मेटाबॉलिक रेट भी इतना नहीं है। मेटाबॉलिक रेट इतना है तो ज़्यादातर तो उससे मैं खाया ही गया, ज़्यादातर तो उसमें फूड से कन्वर्ट हो गया उसकी एनर्जी में, तो फिर जो बाहर गार्बेज निकल रहा है पेशाब के रास्ते वो इतना बदबूदार नहीं होगा, पानी की तरह होगा। पानी ज़्यादा पियोगे तो पानी क्लियर निकलना शुरू हो जाता है, पानी कम पिया है तो थोड़ा पीले रंग का होगा, जो कम पिया है तो फिर पीले रंग का पेशाब भी आना शुरू हो जाता है। और उसका मतलब ये है कि जितने मैक्सिमम टॉक्सिन निकल सकते हैं, जितना पानी शरीर में है, जो ब्लड किडनी ने वापस भेजना है, जो किडनी ब्लड वापस भेजेगी और उसमें जित पानी की अगर क्वांटिटी कम होगी तो फिर पेशाब भी कम आएगा। वो कोशिश करेगी कि शरीर के अंदर तो पानी रह जाए ना, और बाहर निकलेगा तो वो उसमें ज़्यादा गार्बेज होगा, कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होगी, वो पीले रंग का पेशाब होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ही जो शरीर से गार्बेज मिला हुआ है ब्लड में और वो किडनी में गया है, तो किडनी कोशिश करेगी कि जितने भी इंजीरियस सब्सटेंस हैं, बॉडी को नुकसानदेह वाले सब्सटेंसेस हैं, मैं उन सब लोग को फ़िल्टर कर दूँ। शुगर है किसी को, क्यों हम यूरिन टेस्ट करते हैं? इसलिए करते हैं कि गार्बेज कहाँ, मैंने बहुत बार ये एग्ज़ाम्पलें आपको दी हैं कि कमरे का गार्बेज निकाल के झाड़ू पोछा करके आप बाहर निकालते हो ना,
अगर उसकी छानबीन करें तो हमें पता चलता है कि इसमें लकड़ी के कण निकल रहे हैं, तो मतलब लकड़ी कहाँ लगी हुई है? दरवाज़े हैं, चुगाटे हैं, खिड़कियाँ बनी हुई हैं लकड़ी से, उससे निकल रही होगी। और अगर सीमेंट आ रहा है हमारे गार्बेज में जो हम कमरे से साफ करके निकाल रहे हैं, तो मतलब सीमेंट दीवारों पे लगा हुआ है, हमें पता चल जाता है ना। ठीक इसी तरह ही ये जो यूरिन है, इसमें क्या-क्या निकल रहा है, उससे भी हमें अंदाज़ा लगता है। स्टूल भी चेक करते हैं हम लोग, उसमें पता लगता है कि खून तो नहीं आ रहा, उसमें पता लगता है किसी तरह की कृमि तो नहीं ज़्यादा बढ़ गई, वो सब पता लगता है कि व इंटेस्टाइनल वर्म्स जिनको हम बोलते हैं। ये सब चीज़ें गार्बेज से शनाख्त करने पर हमें पता चलता है कि शरीर के अंदर गार्बेज बाहर निकल रहा है, उसमें कौन-सी चीज़ आ रही है और वो वहाँ बॉडी में कहाँ लगी हुई है। एज़ ए डॉक्टर हम लोग जानते हैं कि एपिथेलियल सेल्स कहाँ लगे हुए हैं। एपिथेलियल सेल्स की अलग-अलग किस्में हैं, वो कहाँ पर हैं और फिर हमें पता चल जाता है कि इसमें तो स्क्विमस सेल निकल रहे हैं, स्क्विमस एपिथेलियल सेल निकल रहे हैं या इसमें कनेक्टिव टिश्यू निकल रहे हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई नुक्स कहाँ हो सकता है। इसीलिए हम लोग पेशाब चेक करते हैं और या स्टूल भी चेक करते हैं, तो उससे ये जानने के लिए कि अंदर के निज़ाम ने ज़्यादा से ज़्यादा गार्बेज बाहर निकाल दिया, किडनी ने ज़्यादा से ज़्यादा गार्बेज बाहर निकाल दिया, पेशाब कम आया तो पीछे का पानी उसने पूरा करने की कोशिश की थी। अगर पानी ज़्यादा पी लिया तो फिर पानी को ज़्यादा फ़िल्टर करके बाहर निकालेगी क्योंकि गार्बेज जितना भी उसको निकालना है, गार्बेज ज़्यादा हो गया तो रंग पीला हो जाएगा, गार्बेज कम हो गया तो रंग व्हाइट हो जाएगा। ये सब हो जाएगा। दूसरी बात, गार्बेज जब भी होगा तो उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। जैसे किसी भी बाथरूम में जाओ ना, जहाँ पब्लिक बाथरूम में जाओ, तो वहाँ सफाई अगर पूरी नहीं हुई, तो उसमें क्या होगा? अमोनिया की स्मेल दूर-दूर तक फैलती महसूस होती है। अंदर एंटर करो, अमोनिया की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी कि पूरी सफाई नहीं है। इसी तरह ही अमोनिया की स्मेल के साथ अलग-अलग तरह की चीज़ें पेशाब से और भी निकल सकती हैं और वो ये साबित करेंगी कि शरीर के अंदर का निज़ाम पूरी तरह सही नहीं है और अंदर का निज़ाम अगर पूरी तरह सही नहीं है, कहाँ पर सही नहीं है? कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस निज़ाम को ठीक करने की कोशिश करें। होता क्या है? मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दी, मान लिया जाए किसी को उल्टी आ रही है। अब उल्टी आ रही है तो इसका मतलब सीधा-सा मतलब ये है कि भाई उल्टी आ रही है, जो चीज़ आपने खाई है या जो चीज़ आपके अंदर है का मतलब है अंदर से भी बन सकती है ना। जैसे यूरिक एसिड की बात है, सो अंदर से बना है ना। किडनी फेल होगी, किडनी काम नहीं करती, यूरिक एसिड बन गया, अल्टीमेटली अल्टीमेटली उससे भी उल्टी आ सकती है, वो बंद नहीं होगी। सो असली पर्पस तो ये है कि गार्बेज को जानें, चाहे उल्टी का आ रहा है या टैटियाँ स्टूल लगे हुए हैं उसको, डायरिया लगा हुआ है उसकी वजह से आ रहा है, इसको जानें कि ये आ कहाँ से रहा है और इसका कारण क्या है। जब तक हम उसको रिज़ॉल्व नहीं करते, ज़बरदस्ती उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, तब हालात क्या होगा कि ज़बरदस्ती बंद करेंगे, वो अंदर के निज़ाम को गड़बड़ी पैदा करेगा, नुकसान देगा और अगर ऐसा नुकसान देगा, तो फिर इसको एंग्ज़ायटी, घबराहट जैसे आप बोलते हैं ना, दवाई खाने के बाद मेरा शरीर ठीक नहीं है। उसका मतलब यही होता कि दवाई कुदरत के नेचर के असूल के मुताबिक तो नहीं है। अगर उसूल के मुताबिक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको कुदरत रिजेक्ट कर रही है क्योंकि कुदरत के विधान में वो रुकावट पैदा कर रहा है। सो इसीलिए आप लोग जाते उल्टी की बात, डॉक्टर दवाई देता है उल्टी बंद करने के लिए और अगर वो गार्बेज ज़्यादा है, टट्टी के रास्ते निकलना शुरू हो जाएगा और अगर कोई इंडाइजेशन टेम्परेरी है, तो डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, उल्टी बंद कर दी तब तक वो जो इनडाइजेशन पैदा करने वाली बात थी, अगर वो डाइजेस्ट हो गई
तो क्रेडिट उस दवाई को मिल जाता है कि भाई वो दवाई ली थी, गोली उल्टी बंद हो गई थी। लेकिन अंदर की एंग्ज़ायटी को आप मेज़र नहीं करते हो। अंदर की उस गोली खाने से जो घबराहट महसूस हुई, उसको आप मेज़र नहीं करते, आप ये मेज़र करते हैं कि उल्टी बंद हो गई। पर इंडाइजेशन तो था, वो तो ठीक हो गया। लेकिन अगर किडनी फेलियर से यूरिक एसिड बन रहा है, उसकी वजह से उल्टी आ रही है, वो कैसे बंद हो जाएगी? वो तो और घबराहट पैदा करेगी। तो मेरे कहने से मतलब ये है कि हर गार्बेज को बाहर निकलने से रोकने का तरीका ये नहीं है कि उसको बंद कर दें। उसका मतलब ये है कि उसको समझें कि कहाँ का गार्बेज किस तरह का हो सकता है, जो गार्बेज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसके पीछे क्या कहानी है, उस कहानी को दुरुस्त करेंगे तभी ये पूरी बीमारी जो है वो सही हो सकती है, अदरवाइज़ बीमारी सही नहीं होगी। बार-बार चलता रहेगा काम, ऐसा होता है। सो 2 चीज़ें हमने कवर की। एक तो हमने ये कवर किया कि भाई स्टूल में बहुत स्मेली है, छिट-पुट आ रहा है, टूटा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो स्मेल करेगा। इवन कई बार पतला टट्टी स्टूल होता है, तो भी बदबूदार होता है। वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसमें घुल गया है। यूरिन की बात मैंने आपसे कही कि यूरिन में रैप तो नहीं होता, लेकिन उसमें कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे जो शरीर से निकल रहे थे, उनकी कॉन्सन्ट्रेशन क्वांटिटी कितनी है, परसेंटेज कितनी है, उसके हिसाब से वो स्मेल करता है। तो ये हमें जानने की शुगर कैसे चेक करते हैं? पेशाब आया, उसको हम यूरिन से शुगर चेक करते हैं, तो ये पता चलता है कि उसमें कितना कंटेंट, कितनी परसेंटेज जो है, वो शुगर निकल रही है। और किडनी तो कढ़ रही है ना, किडनी तो चाहती है कि पीछे नॉर्मल सही रहे, पीछे का सिस्टम सही रहे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं निकाल सकती हूँ, यहाँ से निकाले। वो हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अंदर से कहीं से शुगर पता है, अब तो हम जानते हैं कि पैंक्रियाज़ बना रही है या पैंक्रियाज़ की रेजिस्टेंस जो है, वो शुगर पैदा कर रही है। उसके मुताबिक उसका उपचार करने की ज़रूरत है। सो ये चीज़ें जो बाहर आ रही हैं, जिसको एक्सक्रीशन हमने कहा है, वो एक्सक्रीशन को समझने की ज़रूरत है, उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। अब तीसरी बात आती है पसीने की। आपने देखा होगा, बच्चों को इतना पसीना नहीं आता और जो आता है तो इतना स्मेली नहीं होता। अगर आपने उसकी खुराक का पूरा ध्यान रखा हुआ है, दौड़-भज बच्चा ये उछल-कूद पूरी कर रहा है, मेटाबॉलिक रेट हाई है, तो उसको स्मेल नहीं आएगी। और अगर आएगी, तो आजकल तो क्या है, अडल्ट्रेशन हम लोगों ने बहुत कर दी, वैक्सीनेशन की वजह से भी कई अडल्ट्रेशन हो रही है। बॉडी का सिस्टम अंदर का निज़ाम उसको ज़बरदस्ती अपनी तरीके से चला रहे हैं और कुछ बच्चों को इस तरह का गार्बेज अंदर बन रहा है, जो पसीने के तौर पे बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो निकल नहीं पाता। उसके लिए मैंने आप सब लोगों को बताया कि स्किन में कुदरत ने एपोक्राइन ग्लैंड लगाए हुए हैं। एपोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये है कि जो गार्बेज स्किन के अंदर जितने स्किन ऐसे लगता है जैसे कंप्लीट है, कि इसमें कोई सुराख नहीं होगा। कपड़ा कमीज़ है ना आपकी, तो आप बोलेंगे तो ये तो है बिल्कुल पूरे का पूरा इसमें तो जगह है ही नहीं, लेकिन उसमें पानी डाल के देखो, निकल जाएगा। इसी तरह ही अगर नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब और ज़्यादा संगनी कोई चीज़ है इसमें। स्किन से पसीने के साथ जो ब्लड में आप टॉक्सिन आया वो नहीं निकल रहा है, ख़ारिश पैदा करेगा, इरिटेट पैदा करेगा। और पसीना आ भी गया है, तो कइयों को पसीना बाहर निकलने के बाद भी ख़ारिश हो सकती है। क्यों? क्योंकि अंदर से निकलने वाला जो गार्बेज था वो टॉक्सिक था और टॉक्सिक जो बाहर आया, जहाँ लगा, साल्ट लगा, वो ख़ारिश पैदा कर रहा है। और अगर आप लोग उसमें कोई ऑइंटमेंट या कोई इस तरह की चीज़ लगा के उसको बंद करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा? कुदरत को तो वो गार्बेज निकालना है। स्किन एक बहुत बड़ा ऑर्गन है और पूरे शरीर को ये रैप करता है।
और अब एक जगह, क्योंकि स्किन में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है पूरे शरीर से आकर गार्बेज निकालने की कोशिश कर रहा है, एक जगह उसने निकाला, आपने उसको बंद कर दिया। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन आपने लगाई जिससे वो बंद हो जाए दरवाज़ा। बंद कर दिया, वो कहीं और जाके निकलेगा। और फिर ऐसा करते-करते एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि पूरा शरीर आपका स्किन डिजीज़ेज़ से भर जाएगा। और स्किन डिजीज़ेज़ से जब भर जाएगा तो हम लोग कोशिश करते हैं कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, आजकल जितने भी ऑइंटमेंट्स ये सब बने हुए हैं, मार्केट में चल रहे हैं, वो सिद्धांत नहीं कहता। नेचर के खिलाफ ज़बरदस्ती आप जो मर्ज़ी करिए, आप जीत नहीं पाएँगे। जब तक लाइफ़ है ना अंदर, लाइफ़ आपकी दवाइयों के साथ लड़ रहा है कि नहीं भई तुम जो कर रहे हो गलत, मुझे एक्सेप्टेड नहीं है। तुम क्रीम लगा रहे हो, मेरा ये जो मैंने बाहर गार्बेज निकाला था, इसको बंद करने के लिए, ये मुझे एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, मेरे अब हाथ तो है नहीं, ये ब्लड कहीं और जाएगा, कहीं और से निकल जाएगा। तो इसीलिए ये जो एक्जिमा टाइप की चीज़ें हैं, नाम तो हमने बहुत रख दिए। कभी किसी को रिंगवर्म कह दिया, कभी के तो एरिसिपिलिटिस कह दिया, कभी एक्जिमा कह दिया, ड्राई एक्जिमा कह दिया, कभी सोराइसिस कह दिया, कभी बहुत से नाम हमने स्किन डिजीज़ों के रख दिए। लेकिन ये एक तरह की अलग-अलग इंडिकेशन है हमारे लिए कि अंदर से गार्बेज कहाँ से आ रहा है, किस तरह का आ रहा है, कहाँ निकल रहा है। और अगर वो निकल रहा है, तो फिर उस चीज़ को, उस सोर्स को समझने की ज़रूरत है कि ये किस सोर्स से निकल रहा है। उस सोर्स को ठीक करने की ज़रूरत है, बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बंद करोगे तो कामयाब नहीं होंगे, और शरीर में और जगह में बेकार होगा, और जगह में वो फैलेगी। इसलिए आज के इस लेक्चर में मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें शरीर से बाहर निकलती हैं, उन सबको बंद करने की कोशिश मत कीजिए। नेचर की डिमांड को समझिए। नेचर की डिमांड क्या कहती है, उसके अनुसार काम कीजिए। हाँ, कुछ एक ऐसे हालात हैं, बर्दाश्त से बाहर हैं। उस वक़्त आप उसको कंट्रोल करें। कुदरत भी बहुत ज़बरदस्ती उल्टी ला रही है, बहुत जल्दी टट्टियाँ लग रही हैं, बहुत सारा कुछ है जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, हो सकता है कुछ और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। उसको आप मिनिमाइज़ करने की कोशिश कीजिए, लेकिन बंद करने की कोशिश मत कीजिए। बंद करने की कोशिश कीजिएगा तो उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, वो आप सँभाल नहीं पाएँगे, अप टू डेथ भी हो सकते हैं। और अगर आप उसको मिनिमाइज़ करके चलाएँगे, तो हो सकता है आप आने वाले समय में उसको और सुधार कर पाएँ और उसका बचाव हो सके। इसलिए ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है स्किन के संबंध में। और इसी तरह ब्रीदिंग की बात है कि साँस आम लोगों का बदबूदार नहीं होता है। बदबूदार तभी होता है जब हमारा इनडाइजेशन होता है। और इनडाइजेशन क्यों होता है? मैंने आपको सब लोगों को बताया कि खून खुराक अंदर जाती है, फिर अंदर दोबारा उसका फिर फर्मेंटेशन होता है, आंतड़ियों में जाकर। और गैस जो बनती है, ज़्यादातर तो ब मेटाबॉलिक रेट तेज़ है, सब कुछ हज़म हो जाता है, बर्पिंग होने की या डकार आने की कोई बात ही नहीं है। बदहज़मी होने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे आप लोड के अनुसार एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, आप खाई हुई खुराक को मेटाबॉलाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस हिसाब में क्या होगा? उस हिसाब से वो फर्मेंटेट होगा, अंदर गैस बनेगी, उबलेगा और वो गैस ऊपर को आएगी। ऊपर गैस जाने के लिए, रोकने के लिए कुदरत ने प्रबंध बहुत क करे हुए हैं। लेकिन बार-बार जब लगातार गैस बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो अल्टीमेटली वो प्रबंध नाक़स हो जाएँगे, कामयाब नहीं होंगे। और कामयाब नहीं होंगे, तो ये पाइलोरिक ओपनिंग खुल जाएगा, कार्डिक ओपनिंग खुल जाएगा, डायाफ्रैग्मेटिक ओपनिंग खुल जाएगा, एपिग्लोटिस खुल जाएगा और गैस मुँह में आ जाएगी। और कई बार वो गैस जो है ऊपर आपका सिर दर्द भी कर देगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये गार्बेज कहाँ से आ रहा है और उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। सो आज का समा समाप्त। मैं गुरदीप सिंह संधू, आपका होम्योपैथिक कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाज़िर हूँ। 7021 विलेज पार्क वे, डबलिन, कैलिफ़ोर्निया 94568। मेरा फ़ोन नंबर 408
6871899. Email address homeomedicine HOMEOMEDICINE किसी भी वक्त आप किसी बीमारी से लिप्त हैं और इलाज करवाते करवाते थक गए हो, तो एक मौका होम्योपैथिक के साइंटिफिक अप्रोच को इलाज को दीजिए और कॉल कीजिए 408-687-1899। कॉल करने की कोई फीस नहीं है, कंसल्टेशन आप करते हो तो कोई फीस नहीं है। आप अपनी बीमारी को समझ सकते हैं और उसकी साइंटिफिक अप्रोच क्या हो सकती है ये आप समझ सकते हैं। किसी भी बीमारी के संबंध में आप कॉल कर सकते हैं। आप सबका रब राखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता है। आज पंजाबी का प्रोग्राम हम नहीं कर पाएँगे क्योंकि उससे पहले जो रेडियो पंजाब पंजाबी का प्रोग्राम हो चुका था, इसको हम कल पर छोड़ते हैं। यही चीज़ हमें रिपीट करनी थी और पंजाबी के प्रोग्राम में कल हम फिर इसको आगे लेकर चलेंगे। आप सबका रब राखा। आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।